वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मैरीटाइम चोक पॉइंट्स इन द इंडियन ओशन। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस वेस्ट एशिया में बढ़ गई हैं, इससे जो है हमारी अटेंशन जा रही है क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स पर। नॉट जस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बट ऑल्सो बैबल मैंडेब और मलक्का स्ट्रेट। तो ये मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जो होते हैं वो नैरो सी राउट्स होते हैं जिनके थ्रू सब्सटैंशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल ट्रेड या फिर एनर्जी सप्लाईज पास होती हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपने देखा होगा कि ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ जोड़ता है। लगभग 20 से 25% जो ग्लोबल ऑयल का ट्रेड है यहीं से आता है, यहीं से पास होता है। कोई भी ब्लॉकेड या मिलिट्री डिस्ट्रप्शन में अगर होती है कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो उससे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो है वो बहुत तेज़ी से प्राइसेस बढ़ते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड भी डिसरप्ट होता है। अब बाबल मंडब स्ट्रेट क्या है? ये यमन और जिबूती के बीच में पड़ता है अफ्रीका में। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। लगभग 10% जो ऑयल ट्रेड है वो यहाँ से ही जाता है। अब मलक्का स्ट्रेट अगर हम देखें तो वो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है और ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। लगभग 1/4 ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है यहीं से पास होता है और चाइना का जो 80% ऑयल इम्पोर्ट है वो इसी राउट से आता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाबल मैंडेब और जो है ये मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली क्रिटिकल हैं ग्लोबल कॉमर्स और एनर्जी मूवमेंट के लिए। तो शिपिंग जो है बाबल मैंडेब स्ट्रेट के थ्रू वो कई बार डिस्ट्रप्शंस फेस करती है क्योंकि हुथी रिबेल्स जो है रेड सी रीजन में वो इसको टारगेट करते रहते हैं। इसलिए बहुत से शिपिंग कंपनीज जो है अपने वेसल्स को केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो है वो डाइवर्ट करके लेकर आती हैं साउथ अफ्रीका में जो पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रे डॉग मेनेस। टॉपिक आपके सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिए हैं सभी तरह के चैलेंजेस जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट और के अगेंस्ट किए गए थे और क्रिटिसाइज़ किया है स्टेट्स को कि वो पैसिव बैठी हैं जबकि सिटीजन्स जो है वो डॉग अटैक्स रिस्क फेस कर रहे हैं। इंडिया का जो स्ट्रे डॉग क्राइसिस है अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क जो 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो है राइट टू लाइफ में राइट टू मूव फ्रीली भी है पब्लिक स्पेसेस में बिना किसी फेयर ऑफ अटैक के। तो उन्होंने कहा है चिल्ड्रन और एल्डरली सिटीजन जो है उनको अब वल्नरेबल नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये क्यों हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन? 2025 में जब एक 6 साल के बच्ची को न्यू दिल्ली में एक डॉग बाइट से जो है वो मर गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया जुलाई 2025 में और कोर्ट ने डिस्क्राइब किया कि जो ये डॉग अटैक्स और रेबीज़ रिलेटेड डेथ्स हैं ये एक सीरियस पब्लिक सेफ्टी कंसर्न है। कोर्ट ने एम्फोसाइज किया कि सिटीजन जो है उनको अलाउ होना चाहिए कि वो फ्रीली मूव कर सके बिना फेयर ऑफ डॉग बाइट्स के। तो इस ऑर्डर ने प्रोटेस्ट ट्रिगर कर दिया एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और डॉग फीडर्स से। तो जब पेटिशंस डाली गई तो मैटर को 3 जज बेंच के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी अपनी फिर जो है स्टैंस को सॉफ्टन किया और कहा कि जो है स्टेरलाइजेशन की जो और रिलीज़ की पॉलिसी है अंडर ABC रूल्स उसे ही फॉलो किया जाए और अथॉरिटीज़ को कहा कि रैबिड और जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर्स में रखा जाए। जो स्ट्री डॉग्स की जो फीडिंग थी उनको प्रोहिबिट किया गया पब्लिक प्लेसेस में। तो रेजिडेंट वेलफेयर ग्रुप्स और फैमिलीज ऑफ डॉग बाइट विक्टिम्स ने आर्ग्यू किया कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं राइजिंग स्ट्रे डॉग मैनेस को। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज किया लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, कहा कि इससे जो है ये एक स्ट्रेटजी जो है इनइफेक्टिव रहेगी और अनसस्टेनेबल है। एक ब्रॉडर रिव्यू किया गया कि कैसे स्टेट्स और म्यूनिसिपल बॉडीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और शेल्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है कि डायरेक्ट किया है सभी स्टेट्स को या सभी स्टेट्स को कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में एक फुली फंक्शनल ABC सेंटर होना चाहिए। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाओ अगर जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी या लोकल नीड्स ज़्यादा हैं। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म लेकर आओ हैंडल करने के लिए स्ट्रे एनिमल्स ऑन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अथॉरिटीज़ जो है उनको लीगली परमिटेड एक्शन लेना होगा इंक्लूडिंग यूथनेशिया इन केस अगर डॉग जो है वो रैबिड डॉग है, इनक्यूरेबली इल है या डेंजरस है, एग्रेसिव डॉग है। ठीक है, लेकिन ये सब मेजर्स जो हैं वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर कंप्लाई होने चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को कहा है कि सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना आप रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस देखने के लिए। अब ABC रूल्स क्या कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन करो, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाओ और प्राइमरी मेथड की तरह यूज़ करो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करने के बाद इनको सेम एरिया में छोड़ दिया जाए जहाँ से इन्हें उठाया था। तो ABC रूल्स में इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स अलाउड नहीं है। ठीक है, और आर्बिट्रेरी रेलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स भी अलाउड नहीं है। यूथनेशिया सिर्फ तभी परमिटेड है अगर जो है डॉग रैबिड डॉग है,
टर्मिनली इल है या फेटली इंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शी मार्ट इनिशिएटिव, टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशन वाइड रोड मैप दिया है वुमेन लेड रूरल मार्केटिंग इकोसिस्टम्स बनाने का थ्रू शी मार्ट इनिशिएटिव। शी मार्ट क्या है? एक इनिशिएटिव है एम्पावर करने का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स क्रिएट करके क्लस्टर लेवल फेडरेशंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। तो एम है कि क्रिएट किए जाएं स्ट्रॉन्गर मार्केट लिंकेजेस, इंप्रूव हो सके विजिबिलिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, स्ट्रेंथन हो सके सेल्फ हेल्प ग्रुप इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंदर जो है कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स होंगे, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट की जाएगी, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये शी मार्ट जो है बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप मेड प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, इन सबको सपोर्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष अनुदान पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष जो है उन्होंने आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये आयुष ग्रिड इनिशिएटिव के अंदर प्रोजेक्ट है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है सबमिशन, प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग ऑफ फंडिंग प्रपोजल्स जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की होती हैं उनसे रिलेटेड। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि 100% ट्रांसपेरेंसी आए और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ताइवान ट्रेवलॉग जो है यांग शुआंगजी, उनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हर साल दिया जाता है और 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था एज मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। लॉन्ग टर्म फिक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो कि ट्रांसलेट होती हैं इंग्लिश में और पब्लिश होती हैं यूके आयरलैंड में, उन्हें जो है ये अवार्ड मिलता है। 50,000 पाउंड्स की जो है इसमें प्राइज़ मनी होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू स्ट्रैगलर स्टार। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंफर्म डिस्कवरी की है ब्लू स्ट्रैगलर स्टार की, जो कि एक होस्ट कर रहा है एक ब्राउन ड्वार्फ कंपेनियन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम में। तो ब्लू स्ट्रैगलर स्टार क्या है होते हैं? ये हॉट ब्लू मैसिव स्टार्स होते हैं और ये ऐसे क्लास ऑफ स्टार होते हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं ओल्ड डेंस स्टेलर सिस्टम्स में जैसे ग्लोबुलर क्लस्टर्स। ये एक एक्सटेंशन में होते हैं मेन सीक्वेंस स्टार के, और ब्लू होते हैं, ब्राइटर होते हैं देन मेन सीक्वेंस स्टार ऑफ स्टार्स। कैसे डिफरेंट होते हैं? बहुत कम होते हैं ये पहली बात तो, और ये एक्सपैंड होते हैं साइज़ में और कूलिंग डाउन होती है, मतलब ये उल्टा होता है, मतलब अदरवाइज़ तो हॉट होते हैं स्टार्स, ये कूल डाउन होते रहते हैं, ऑपोजिट करते हैं, मतलब ग्रो होते रहते हैं ब्राइटर और हॉटर, और ये अपने पीयर से पीछे रह जाते हैं एवोल्यूशन में। तो इसलिए इनको हम स्ट्रैगलर्स कहते हैं, ब्लू स्ट्रैगलर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि इनका हॉट और ब्लू कलर होता है। तो ये क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं? क्योंकि ये किसी फैमिली ऑफ स्टार्स को बिलोंग नहीं करते, और ये जो मैटर है वो अपने जायंट कंपेनियन स्टार से ड्रॉ कर रहे होते हैं, और इस प्रोसेस में एक थर्ड स्टार इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करवा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ ULPGM V3 एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मोड्स में। तो ये ULPGM है क्या, V3 है क्या? ये एक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल है जो ड्रोन से लॉन्च होएगा। इसको फायर किया जा सकता है प्लेन और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है सभी इसमें, और इसको कैरी और ऑपरेट किया जा सकता है इंडिविजुअल सोल्जर द्वारा रिमोट और माउंटेनियस रीजन्स में। मैक्सिमम रेंज इसकी 4 किलोमीटर है ड्यूरिंग डे, 2.5 किलोमीटर नाइट में, 5 किलोग्राम का इसका वेट होगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है लाइट वेट ड्रोन्स के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट वॉल जो है राजस्थान की, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसको सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल जो है वो नेम किया गया है वर्ल्ड में यूनेस्को सर्वे द्वारा। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है, स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है वेस्टर्न अरावली हिल्स में। 5th सेंचुरी में इसे राणा कुंभा ने कंस्ट्रक्ट किया था, रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़ थे जो। 36 किलोमीटर्स की है ये, और इसकी वॉल जो है वो सेकेंड टू द ग्रेट ऑफ चाइना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। फोर्ट में 7 फोर्टिफाइड गेटवेज हैं और एंशिएंट टेम्पल्स हैं, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, और ये एक रिफ्यूज होता था मेवाड़ रूलर्स के लिए ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। ये बर्थ प्लेस भी है महाराणा प्रताप जी का, और ये फोर्ट सराउंडेड है बाय कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So now let us see all these topics in English. So the first topic is maritime choke points in the Indian Ocean. This topic is important for international relations. So escalating geopolitical tensions in West Asia have renewed attention on critical maritime choke points like Strait of Hormuz, Bab el Mandeb and Malacca Strait.
So maritime choke points are narrow sea routes through which a substantial volume of global trade and energy supplies pass. So Strait of Hormuz lies between Iran and Oman, and it connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and Arabian Sea. Around 20 to 25% of the global oil trade passes through it. Any blockade or military disruption of the Strait of Hormuz can trigger sharp increases in global crude oil prices and disrupt international trade. So Bab el Mandeb Strait lies between Yemen on the Arabian Peninsula and Djibouti or Eritrea in Africa. It connects the Red Sea to the Gulf of Aden. So its importance lies in the fact that nearly 10% of the global seaborne oil trade passes through this route. So what is Malacca Strait? It is located between Malaysia, Singapore and Indonesia. It connects the Indian Ocean with the Pacific Ocean. Nearly one-fourth of global trade passes through it, and around 80% of China's oil imports transit through this route. So apart from Strait of Hormuz, there are two additional choke points like Bab el Mandeb and Malacca Strait, and they are equally critical for global commerce and energy movement. Shipping routes at Bab el Mandeb Strait have already faced disruptions due to attacks by Houthi rebels in the Red Sea region. Because of that, several shipping companies have diverted their vessels around the Cape of Good Hope in South Africa. Okay. So the next topic is stray dog menace. This topic is important for your social issues. Supreme Court has dismissed all challenges related to stray dog management and strongly criticized states for remaining passive while citizens face increasing dog attack risks in public spaces. Court observed that India's stray dog crisis has reached alarming levels due to poor implementation of animal birth control framework, which was introduced in 2001. So this issue has been linked to Article 21, where the court held that right to life includes the right to move freely in public spaces without fear of attack, stressing that children and elderly citizens cannot be left vulnerable. So what has triggered the Supreme Court's intervention? Supreme Court took up the stray dog issue suo moto in July 2025 after reports of a 6-year-old girl in New Delhi dying from a dog bite. The court described the rise in dog attacks and rabies-related deaths as a serious public safety concern. The court emphasized that citizens should be able to move freely without fear of dog attacks. This order triggered protests from animal welfare organizations and dog feeders. Following petitions seeking recall of the order, the matter was referred to a 3-judge bench led by Justice Vikram Nath. Supreme Court later softened its stance, saying that basically it restored the existing sterilization and release policy under the ABC rules. It allowed authorities to keep rabid and aggressive dogs in shelters. It prohibited feeding stray dogs in public spaces. Okay, but what happened is that resident welfare groups and families of dog bite victims argued that authorities had failed to control the rising stray dog menace. So animal welfare organizations opposed large-scale removal of stray dogs, arguing that such a strategy would be ineffective and unsustainable. Over time, the hearings expanded beyond immediate dog attack incidents into a broader review of how states and municipal bodies were implementing sterilization, vaccination, and shelter management policies. So, Supreme Court directed every district in India to establish at least one fully functional ABC center. States and union territories have been asked to further expand this infrastructure based on population density and local needs. Okay, so court has also directed the NHAI and state governments to develop a coordinated mechanism for handling stray animals on highways and expressways. The court also clarified that authorities may take legally permitted action, including euthanasia, in cases involving rabid dogs, incurably ill animals, demonstrably dangerous or aggressive dogs. Such measures must comply with the Prevention of Cruelty to Animals Act, and to ensure the implementation, Supreme Court directed all high courts to initiate suo moto continuing proceedings for regular monitoring of compliance with these directions. So, what does the ABC rules provide? So ABC rules basically say that you have to identify sterilization and anti-rabies vaccine as the primary vaccination as the primary method to control stray dog population. After sterilization and vaccination, they must be released back into the same area from where they were picked up. And these rules prohibit indiscriminate killing of stray dogs and arbitrary allocation of stray dogs. Euthanasia is permitted only in specific cases which involve rabid dogs or terminally ill dogs or animals or fatally injured animals. So the next topic is She-Mart initiative. This topic is important for our economy section. Ministry of Rural Development has initiated a nationwide roadmap for the creation of women-led rural marketing ecosystems through She-Mart initiatives. So this initiative is to empower women entrepreneurs by creating community-owned retail outlets within cluster-level federations or self-help groups. The aim is to create stronger market linkages, improving visibility of local products, strengthening SHG, the self-help group institutions,
So the key features of She-Mart initiative is community-owned retail outlets, direct market access, economic growth, permanent infrastructure, empowerment. She-Mart will primarily support self-help groups made goods like handicrafts, textiles, food products, agricultural produce, and value-added processed products. So Ministry of Rural Development will be the nodal ministry for the same. The next topic is Ayush Anudan portal. This topic is important for your governance section. Union Minister of State for Ayush and Minister of State for Health and Family Welfare launched the Ayush Anudan portal, which has been developed by Ministry of Ayush under the Ayush Grid initiative. It's a digital platform to streamline the submission, processing, and monitoring of funding proposals under central sector schemes of Ministry of Ayush. Primary objective of the portal is to ensure 100% transparency, efficiency, accountability, and easy accessibility in the grant management process, and it is also integrated with the NGO Darpan portal. So the next topic is International Booker Prize. This topic is important for your social issues. Taiwan Travelogue by Yang Shuangzi has been awarded the International Booker Prize. This prize is awarded annually. It was established in 2005 as the Man Booker International Prize. It celebrates the best works of long-form fiction or collection of short stories translated into English and published in the UK or Ireland. So it recognized the vital work of translators with £50,000 prize money divided equally between authors and translators. So the next topic is Blue Straggler Star. This topic is important for your Science and Tech section. Recently, researchers have made the world's first confirmed discovery of a blue straggler star hosting a brown dwarf companion in an extraordinarily compact binary system. So blue stragglers are hot blue massive stars which have a different trajectory of evolution from the norm. They are a class of stars observed in old dense stellar systems like globular clusters. They lie on an extension of the main sequence star, and they are bluer and brighter than the main sequence turn-off stars. So how they are different? So there are few stars when they are expected to start expanding in size and cooling down. They do just the opposite. They start growing brighter and hotter. Since they lag behind their peers, they are called stragglers, and they are called blue stragglers because of their hot blue color. So why they behave differently? First, they do not belong to the family of stars in the cluster. Secondly, they draw matter from the giant companion star, and also there is a third star which facilitates this process of drawing matter from the companion star. So the next topic is UAV launched precision guided missile V3. This topic is important for your security section. Recently, DRDO has successfully completed the final development trials of ULPGM V3 in air-to-ground and air-to-air modes. So this ULPGM is a precision guided air-to-surface missile launched from drones. It can be fired in plain and high altitude areas. So it has day and night capability. It can be carried and operated by individual soldiers in remote and mountainous regions. It can achieve a maximum range of 4 km during the day and 2.5 km at night, and it weighs about 5 kg, which enables integration with lightweight drones. So the next topic is Kumbhalgarh Fort. This topic is important for your art and culture section. Kumbhalgarh Fort Wall in Rajasthan, often called the Great Wall of India, has been named as the second longest surviving wall in the world by a UNESCO survey. So Kumbhalgarh Fort is located in the Rajsamand district of Rajasthan. So it is strategically located in western Ravli Hills. It was constructed in 15th century by Rana Kumbha, the ruler of Kingdom of Mewar. It spans over 36 kilometers and its walls are second only to a Great Wall of China, earning it the moniker of Great Wall of India. It has been designated as a UNESCO World Heritage Site. This fort contains 7 fortified gateways and ancient temples, both Hindu and Jain. For centuries, this fort served as a refuge for Mewar rulers during times of war. It is the birthplace of Mewar's legendary king Maharana Pratap, and this fort is surrounded by the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.